third mode of heat transfer was radiation. We discussed that for radiation, no medium is required, and radiation takes place in the fastest way when there is no medium. I mean, when there is vacuum, right? So first of all, you should write that. पहले बता चुके ये चीजें, है ना? That radiation heat exchange requires no medium. Radiation heat exchange requires no medium. अगर medium होगा, still radiation will be there, but the extent of radiation in presence of medium will be less as compared to when there is no medium. Vacuum में radiation heat exchange will be fastest. The heat exchange by radiation will be highest in vacuum. Okay, so radiation heat exchange requires no medium. The heat exchange by radiation, is fastest or is to highest extent when there is vacuum, right? Is highest when vacuum is there. So if there is some medium, there are two cases, two bodies are there, they are exchanging heat by radiation, right? If the bodies are present such that in between there is some medium, and in one case the bodies are present such that there is no medium in between, it is completely vacuum, then the case where vacuum is there, heat exchange by radiation will be highest, right? Let me tell you one more thing कि रेडिएशन पे अभी हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया, रेडिएशन पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पास कन्वेक्शन में यू हैव ऑल दोज डेरिवेशंस, ऑल दोज इक्वेशंस, these kind of derivations, equations are not there in radiation, right? As far as GATE exam is concerned, radiation questions are limited to the view factors, the basics of radiation and the surface properties. उससे और ज़्यादा questions नहीं आते, ठीक है? So our discussion of radiation will be very limited, ठीक है? ये उतना ही है, इससे ज़्यादा आपको radiation नहीं पढ़ना है, ठीक है? Okay, so radiation heat exchange requires no medium, highest when vacuum is there. That was your first point. Next point, write down which radiation we are talking. If you see the electromagnetic spectrum, radiation heat exchange, there are actually two theories that radiation heat exchange takes place in the form of small packets of energy called photons. That is one theory, right? And another theory is radiation heat exchange takes place in the form of electromagnetic radiation, right? So both theories are well applicable. ठीक है, some parts of radiation is understood in the form of with the help of that photon theory, and some part of radiation is understood with the help of electromagnetic theory. Okay, electromagnetic wave propagation theory. So radiation is assumed to take place. ये theories है बस, है ना? No, for every process there are some proposed theory. तो radiation को भी दो तरह से propose किया गया, that it may take place such that यहाँ से यहाँ अगर रेडिएशन हो रही है, then energy is being transported in the form of small pockets of energy which is called photons. Okay, so radiation is assumed to take place in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves, photons के फॉर्म में भी सोचा सकता है और electromagnetic waves के फॉर्म में भी सोचा जा सकता है. We will be writing electromagnetic waves. This is also accepted theory, that is also an accepted theory. ठीक है, so you can say that you must have seen that electromagnetic spectrum. आपने देखा होगा ना, सबसे आगे आपके पास रेडियो वेव्स थी which are having very high wavelength and very low frequency, right? And then आपके पास इस एंड पे आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था. हम लोग किस रेडिएशन की बात कर रहे हैं? Which radiation we are talking about? Any body which is having a temperature, any body which is having a temperature above absolute zero temperature, above absolute zero temperature, emits
thermal radiation. Temperature emits thermal radiation. हर एक बॉडी अगर उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, राइट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर है, देन ईच एंड एवरी बॉडी विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स एमिट्स सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, राइट. तो जो रेडिएशन बॉडी के टेम्परेचर की वजह से इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. देयर आर अदर रेडिएशंस आल्सो. कोई बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर सकती है, कोई कुछ इमिट कर सकता है, राइट. सो या zero temperature emits thermal radiation. Okay, emits thermal radiation. And we when we talk about heat transfer radiation, we are talking about thermal radiation only. Or radiation matlab suppose there are infrared radiations, ultraviolet radiations, there are visible spectrum is also there, right. Now thermal radiation falls write down that thermal radiation is a small section of electromagnetic radiation. Small section of electromagnetic radiation. Thermal radiation is a small section of electromagnetic. ये थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसपे एक एक नंबर के छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमएसक्यू आ सकते हैं. तो ये थ्योरी थोड़ी सी हम लोग पढ़ेंगे, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिएशन पे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर समहाउ रिलेटेड टू द व्यू फैक्टर. सो व्यू फैक्टर को अच्छे से समझ लेंगे एंड देयर आफ्टर योर रेडिएशन पार्ट इज डन, राइट. सो थर्मल रेडिएशन इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम wavelength. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये जो वेवलेंथ की रेंज है 10⁻⁻⁻1 माइक्रोमीटर्स, मींस माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶ to 10⁻² माइक्रोमीटर. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड हमारी डिस्कशन इसी के बारे में है, राइट. नाउ व्हाट डू थिंक, ये वैल्यूज याद रखनी है. आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस, क्योंकि कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं दैट द थर्मल रेडिएशन इज हैविंग not exact values, but they may ask you about the range. The thermal radiation is having wavelength approximately equal to which of the following numbers. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. So this is the range of thermal radiation and we will be dealing in thermal radiation only. Thermal radiation मतलब वो रेडिएशन जो एक बॉडी इमिट करती है अपने टेम्परेचर की वजह से. So any body which exists in this universe which is having a temperature above absolute zero emits thermal radiation, right. Now what do you think, the visible spectrum, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, समझ रहे, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब वो रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें दिखाई देती है, विच वी कैन सी विद आवर आईज, राइट. सो दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम. सो व्हाट डू यू थिंक, दैट विजिबल स्पेक्ट्रम लाइज इनसाइड दिस थर्मल रेडिएशन रेंज और आउटसाइड द थर्मल रेडिएशन रेंज, और दिस थर्मल रेडिएशन रेंज लाइज इनसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम. क्या लगता है? सो आई वाज आस्किंग दैट whether the thermal radiation lies within this visible spectrum or the visible spectrum lies within the thermal radiation, because the thermal radiation, एक बार थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए that the thermal radiation, suppose if it is lying from this say 10⁻⁻1 micrometers to 10⁻²micrometers, right. This is the range of thermal radiation. Out of this radiation, a small part is visible to us. Means the visible portion lies within the thermal radiation. कहाँ से कहाँ तक? This is 0.1. Somewhere there will be 0.4. Suppose this portion is 0.4. So from 0.4 micrometers to 0.76 micrometers, right? 0.1, 0.4, yeah, then 0.76. Suppose this is 0.76. So a small part of thermal radiation, 0.76 micrometer, lies in this visible range. ठीक है. So अगर आपका suppose a body which is having a temperature, it is emitting radiation, and that thermal radiation lies in this range, then definitely it will be visible to us, right? If you talk about solar radiation,
जो सन से जो रेडिएशन इमिट होती है, दैट सोलर रेडिएशन, द वेवलेंथ, सम पार्ट ऑफ दैट सोलर रेडिएशन लाइज इनसाइड दिस वेवलेंथ, सारा का सारा नहीं, कुछ, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट भी, वेयर इज अल्ट्रावायलेट, where is infrared? If you talk about infrared, then from this 0.7 micrometers to this entire बाकी जो आपका बच गया, that is what this is called infrared, 200 micrometer infrared. If you talk about at room temperatures also, this chair, table, whiteboard, every surface is emitting some radiation, some thermal radiation. But you can't see these thermal radiation. Why? Because all those thermal radiations emitted by the bodies at room temperature lies inside the infrared region and they are not visible to us. Some part of thermal radiation, not all, but some part of thermal radiation lies, आपको पता है ना, infrared is having low energy and as compared to ultraviolet, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. And also E is equal to hc by lambda, so E and lambda is inversely proportional. जैसे जैसे रेडिएशन की वेवलेंथ घटेगी उसकी एनर्जी बढ़ेगी. सो इन दिस साइड वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस रेडिएशन, फ्रॉम हियर यू हैव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, UV radiation. So some part of UV radiation falls under this thermal thermal spectrum, right, thermal band, right. So you can see that some part of ultraviolet radiation is also falling in thermal radiation. The entire visible spectrum falls inside the thermal radiation, and the entire infrared also falls under the entire thermal spectrum. You can write down here that the bodies present at room temperature, emit thermal radiation, but they are not visible to us, right? Emit thermal room temperature, emit thermal radiation, right, thermal radiation, but these radiations, आपको कभी दिखा है कि चेयर आपने घर पे रखी और चेयर से लाइट आ रही है, आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ऑल दोज रेडिएशंस फॉल्स अंडर दी. बट अगर आपने कई बार वो देखा होगा, आपने कई बार डिस्कवरी या नेट जियो पे इंफ्रारेड विजन के साथ में जो आपको चीजें दिखाई देती है वो देखा होगा. रूम टेम्परेचर पे सपोज आई एम जस्ट अ लिविंग बॉडी, अगर मुझे कोई इंफ्रारेड विजन के साथ में देखे, देन आपको दिखेगा कि इंफ्रारेड रेडिएशंस के अलग अलग कलर दिखेंगे. आई विल बी अपीयरिंग इन सम वाइट कलर, कोई इस तरह की बॉडी होगी, ये ब्लू कलर की तरह से अपीयर होगी, राइट. सो आपको वो चीजें नॉर्मली नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगी, बिकॉज आई एम इमिटिंग सम रेडिएशन विच फॉल्स अंडर द इंफ्रारेड रीजन, राइट. इसीलिए आप मतलब इंफ्रारेड, आप यूवी विजन का यूज करके नहीं जाते हो, आप इंफ्रारेड रीजन का विजन का यूज करके जाते हो अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां पे आप चीजों को देखना चाहते हो, राइट. सपोज आप नेट जियो पे शूट चल रहा है, नेट जियो पे आप जो भी वाइल्ड लाइफ का शूट करना चाहते हो, आप अंधेरे में शूट करना चाहते हो, तो आप इंफ्रारेड विजन का यूज करते हो. वाई? बिकॉज ऑल द बॉडीज एट रूम टेम्परेचर, भाई थर्मल रेडिएशन तो इमिट करेंगे ही करेंगे, बट होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे जो रेडिएशन इमिट होती है दैट फॉल्स अंडर द इंफ्रारेड रीजन, राइट. तो वो आपको नॉर्मली ऐसे नेकेड आई से विजिबल नहीं होगी, ठीक है. सो द बॉडीज प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर इमिट थर्मल रेडिएशन, बट these radiation means at room temperature falls under the infrared range. अगर आपके पास गेट में कभी कोई क्वेश्चन आए, देखो कई बार होता है ना, आप देखोगे कि छोटा सा 1 नंबर का सवाल बस ऐसा इंफॉर्मेटिव पूछ देता है कि उसका किसी को कोई हवाई नहीं लगती कि क्या है, पता नहीं, ठीक है. एंड बाई चांस अगर आपने वो चीज पढ़ी हो, बाई चांस यू आर लकी इन द एग्जामिनेशन, आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. सो फॉल्स अंडर द इंफ्रारेड रीजन एंड हेंस दे आर नॉट विजिबल टू अस. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया दैट व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन. ओके, so I told you that in this we are assuming in the radiation that it is taking place in the form of electromagnetic waves. So we have for any kind of electromagnetic radiation, you must have read this relation for any kind of electromagnetic radiation or electromagnetic wave. क्योंकि भाई देखो रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए इसको कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह दिया जाता है, ठीक है. सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन E is equal to hc by lambda.
ना, you know these things, is equal to hc by lambda or is equal to h nu, right, where h, c is the speed of light, all of you know, lambda is the wavelength and h is the Planck's constant, E is the energy. So h is having the value of 6.6 into 10 to the power minus 34, and if you see the dimensional consistency, what do you think, what should be the unit of h? Because it is having this is suppose joule, h की unit के बारे में clear होना चाहिए, this is joule, then we have h, meter per second, and then lambda. So lambda is in meters, so meter cancel, this is meter per second, and then I have the unit as joule second, right? 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds, correct? Okay, right, so you have to remember this value, ये value आपको provide नहीं कराई जाएगी in the examination, these things you have to remember, right? So let us proceed. Next point you can write, the amount of radiation emitted by two different surfaces present at same temperature. This is a kind of observation. It has been observed that suppose two types of surface are there. One is a kind of stone, the other surface is a kind of polished metal. Both of them are present at the same temperature. So the amount of radiation emitted by two different surfaces present at same temperature is different. ठीक है, मतलब दो अलग अलग बॉडीज अगर सेम टेम्परेचर पे है तो भी उनसे जो रेडिएशन निकलेगी, दैट रेडिएशन इज डिफरेंट, एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड that radiation emitted by a body strongly depends upon the surface characteristics, types of body, types of surface, right? Okay, so radiation emitted by a body strongly depends upon the nature of the surface and of course the nature of the material also. Nature of material and nature of surface. So it's not only about temperature, it's about nature of surface also. क्योंकि सेम टेम्परेचर पे अलग अलग बॉडीज अलग अलग तरह की रेडिएशंस इमिट करती है. तो ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ टेम्परेचर सेम होगा, इन दैट केस सॉरी, इन दैट केस सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल बी इमिटेड, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इसको नोट कर लो. जल्दी खत्म करेंगे रेडिएशन. मैं थोड़ा सा टाइम बस व्यू फैक्टर में लगाऊंगा, बाकी कहीं कोई टाइम नहीं लगाऊंगा. ठीक है, बिकॉज रेडिएशन से आप कई बार देखोगे, हाँ डेफिनेटली एक क्वेश्चन रेडिएशन से आ ही जाएगा, है ना. आप ये मान के चलो गेट में एक क्वेश्चन रेडिएशन से आएगा ही आएगा. ठीक है, आपको देखो सबसे पहले ये इंश्योर करना है दैट यू नो द एवरेज कंटेंट. एक एवरेज कंटेंट होता है गेट में, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा. और मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है. यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डोंट वरी, वंस द सिलेबस इज कंप्लीट हम लोग ये सेशंस भी लेंगे कि प्रिपरेशन में किन चीज़ों को अब थोड़ा सा हमें प्रायोरिटी देनी है. देयर आर ऑलवेज सम क्वेश्चंस, सम टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर देयर. आई कैन नेम देम, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, राइट. रेडिएशन इज वन ऑफ देम. ठीक है, अब रेडिएशन से, हालांकि रेडिएशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, आप पूरा रेडिएशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट देर आर सम टॉपिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट दो 70-80% टॉपिक्स यू आर कंफर्टेबल इन दोज टॉपिक्स, कि वो मेक श्योर, मतलब डेफिनेटली आपको आता है, उससे ज़्यादा भी आता है, बट व्हेन यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स देन मेक श्योर कि ये चीज़ें तो नहीं भूल रहे ना आप, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं. बट देन देर आर सम क्वेश्चंस जो कभी 2-3 साल में आ गए, कभी नहीं आए. ठीक है, उसको थोड़ा सा नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है. पहली प्रायोरिटी ये है, ये चीज़ें पहले आनी चाहिए. एंड इट्स अबाउट दिस न्यू सिलेबस जो है, जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, जो आप लोग बार बार बता रहे हैं कि सर मतलब इसका कुछ बता दो, तो डेफिनेटली उसका बताएंगे. ठीक है, और हमने काम शुरू भी कर दिया है. ओके, बट उन न्यू सिलेबस में से मुझे भी ये लगता है कि अगर कुछ नया ऐड हुआ है तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा.
राइट, पर सभी में से नहीं आएगा, है ना। जो मेजर पोर्शन है अभी भी आपका वो ये बेसिक्स ही है, ठीक है। सो ओके, सो नोट इट डाउन। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टर्म्स। रेडिएशन में कुछ टर्म्स है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो उन टर्म्स को थोड़ा सा क्लियरली स्पेसिफाई कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज ओनली इन रेडिएशन, आपके पास ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ओके। सो राइट डाउन, सपोज दैट वी हैव अ सरफेस हियर, दिस इज अ सरफेस, correct, this is a surface, okay. Now the net amount of radiation, the net amount of radiation incident on a surface, the net amount of radiation incident on a surface from all directions is called irradiation. Is called, now there is one term, this is called irradiation. So you must know what is irradiation. This is denoted by G. So irradiation means कि एक surface पे irradiation for a particular surface is like एक particular surface पे सारी direction से कितनी radiation आ रही है। You may ask कि सर ये जो radiation जो आप irradiation में count करोगे, ये कौन कौन सी radiation? Is it the radiation which is emitted from some other surface? Or it is the radiation which is reflected from, it is everything should be counted. I don't care when I'm talking about irradiation, I don't care that what is the source of this radiation, from where this radiation is coming, that is not my concern. My concern is how much radiation is falling on this surface, right? So ये सारी radiation मिला के जो radiation इस surface पे fall हो रही है, that is called irradiation, which is denoted by G. Let us talk about the units. So the units of G, it is energy, definitely energy, but it is not simply energy, it is energy per unit area per unit time. So the amount of radiation incident on a surface from all the directions, इसको थोड़ा सा अभी यहीं पे modify कर लेते हैं, all the direction per unit area per unit time is called irradiation, है ना, per unit एरिया पर यूनिट टाइम, अदरवाइज वो डेफिनेशन थोड़ी गलत हो जाती है वहां पे। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इररेडिएशन, है ना, इज कॉल्ड इररेडिएशन, ठीक है जी, ओके। सो द नेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इररेडिएशन, ओके। सो व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट्स विल बी सेम एज फ्लक्स, units of G should be energy, भाई रेडिएशन एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी आपके पास, जूल, किलो जूल, व्हाटएवर, राइट, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो प्लीज नोट, ठीक है, कि रेडिएशन हमेशा इस यूनिट में ही आएगा, फाइन। नाउ व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड, नाउ दिस इज अ सरफेस। अब सरफेस क्या करेगा? इट इज वेरी सिंपल लॉजिक। सरफेस क्या करेगा? इस एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सम पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, राइट। एब्जॉर्ब मतलब वो सरफेस में कहीं चला गया। सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी is absorbed. Some part of incident energy is absorbed. Let's say that A for absorption and A for the Greek letter alpha. So alpha is that portion, that fraction, right? Alpha is not energy. Alpha is the fraction of energy which is absorbed. Okay. So I'll say that right, alpha is that fraction of energy which is fraction of incident energy. Fraction of incident energy or incident radiation that is absorbed. Okay, incident radiation that is absorbed. अब आप पूछोगे सर अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ? सो फ्रैक्शन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय g that was absorbed by the surface. Similarly, some part of the incident energy is reflected by the surface.
every surface reflects some radiation. Some part of incident energy is reflected by the surface. I'm just making this as a notation purpose. Don't think ये reflection इस तरह से होगा and the reflection will be only in the same direction. That totally depends upon the type of surface. राइट आपका सरफेस कैसा उस पर डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्शन कैसा. ये बस एक डिनोट करने के लिए है ना, नोटेशन पर्पस से, रिप्रेजेंटेशन पर्पस से, राइट. सो सिमिलरली सम पार्ट आर फॉर रिफ्लेक्शन एंड द ग्रीक सिंबल इज रो जी. रो जी पूरा एनर्जी होगी एंड रो इज द फ्रैक्शन, राइट. सम फ्रैक्शन रो of incident radiation. इनको याद रखना बड़ा आसान है ना, रो फॉर रिफ्लेक्शन, अल्फा फॉर एब्जॉर्प्शन, लाइक दैट. सम फ्रैक्शन रो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस. रिफ्लेक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. ठीक है कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइक अ मिरर. भाई मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है, ये सरफेस भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा. बट रिफ्लेक्शन, द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस. ये भी लिख लेते हैं यहीं पर. द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में बात कर लेंगे अभी. द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेस. Okay, so some part is reflected, some part is absorbed. So what is left? The remaining portion is transmitted. Transmission भी होगा, right? क्या होगा? Transmission भी होगा कुछ part का. And T for transmission and tau is the fraction which is transmitted. So tau into G is the radiation which is transmitted. Okay, the remaining fraction of incident radiation is transmitted. Transmitted मतलब बॉडी को पास करके निकल गया, right? Incident radiation is transmitted. So nowadays a lot of research is going on. आपने देखा होगा ना कि कई सारी आप कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बिल्डिंग्स देखोगे, those buildings are covered by glasses. तो वो ग्लास यूं नहीं लगाते कि बस दिखने में अच्छा है. अच्छा, ग्लास ऐसा नहीं है ना कि ग्लास के नीचे कई बार ऐसा होता है कि दैट द बिल्डिंग इज मेड विद लाइक ब्रिक्स एंड कंक्रीट, बट उसके बाद आप उस पर ग्लासेस की लेयर, वो ग्लासेस का काम क्या होता है? द ग्लासेस एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर. ठीक है, वो क्या करेंगे? वट एवर इंसिडेंट रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन दैट ग्लास. भाई प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो हॉट समर है, समर में आपने देखा होगा भाई दिल्ली में तो मेरे घर की दीवारें तक गर्म हो जाती हैं, है ना. जिस साइड से सूरज की रेडिएशन कंटिन्यूअस आती रहती है, सोलर रेडिएशन इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ द वॉल. अब उस साइड अगर आप गर्मी में सो गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट. सो रेडिएशन, सीधा साधा फंडा, इफ दैट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड देन इनसाइड आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो ये जो शीशे की बिल्डिंग्स होती हैं, शीशे से जो आउटर जो आपका आउटर पोर्शन है दैट इज कवर्ड बाय ग्लास. व्हाट इज द मेन पर्पस? द मेन पर्पस is to avoid the heating of that inside of that building due to solar radiation. और होता क्या है कि आपने एयर कंडीशनिंग पे इतना खर्चा कर रखा है, राइट. अब बाहर से अगर सोलर रेडिएशन अंदर आएगी तो वो जो आपने एयर कंडीशनिंग की है वो भी इफिशिएंट नहीं होगी. सेम गोज विद कार्स ऑल्सो. इन कार्स आप कोशिश करते हो कि भाई कार में आप बैठो, जो विंडो से जो रेडिएशन आ रही है जिसकी वजह से आपकी कार गर्म हो जाती है, राइट. सो कार्स में भी यही होता है कि आप अलग अलग तरह के ग्लासेस, अलग अलग तरह के रिफ्लेक्टर्स आप कोशिश करते हो कि वो लगा दो एंड देन योर कार रिमेन्स कूल. सो इट्स सिंपल फंडा, राइट. सो योर सरफेस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, absorb and transmit the incident radiation, and the radiation falling on the surface per unit area, total radiation falling on the surface per unit area per unit time is called irradiation. Okay, now there are certain special type of bodies जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने बॉडीज को डिवाइड किया हुआ है ना, बेस्ड ऑन. अच्छा, ऑब्वियसली यू नो दैट अल्फा, इन दिस केस ऑब्वियसली यू कैन राइट दैट अल्फा plus reflected plus transmitted must be equal to 1 for all the engineering bodies. मतलब engineering bodies means क्या होता है? Hey, see, for real body of course some portion of radiation may be transmitted, but जब आप engineering bodies मतलब गेट में जो क्वेश्चन आएगा, जो theoretical questions आप सॉल्व करते हो, उन सभी में unless mentioned
अगर बोल दिया कि नहीं टाउ इज नॉट जीरो, अदरवाइज आप हमेशा टाउ को जीरो लेते हो, आप मानते हो कि दैट बॉडीज देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ नो रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी, राइट। सो आप लिख लो कि द इंजीनियरिंग बॉडीज का मतलब जिनसे हम लोग थ्योरी में डील करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इन रियलिटी ऑल्सो एवरी बॉडी is having tau is equal to 0. I'm not saying that. The engineering bodies are considered to be, and ऐसी बॉडी जिनके लिए टाउ की वैल्यू 0 हो उनको क्या बोलते हैं? are considered to be opaque. opaque for thermal radiation. भाई नॉर्मली आप opaque किसको कहते हो? जिसके आर पार आपको नजर ना आए, you can't see through that body. That kind of body is called opaque. So engineering body also with respect to thermal radiation, if the radiation cannot be transmitted to the body, the value of tau is 0. So if tau is equal to 0, they are considered to be opaque. So in GATE exam also आप ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कि sir in this problem tau was not given, how could I solve this problem, so I left this problem. It's nothing like that. So in practice, in theory, in also for engineering calculation, we considered that all the bodies are opaque. और कई बार ओपेक बॉडीज बताने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग मीन्स द रेडिएशन कैन नॉट क्रॉस दैट बॉडी, राइट। सो फॉर बॉडीज, ओपेक बॉडीज, वी मेक दिस काइंड ऑफ सरफेस, ठीक है। दिस इज ओपेक बॉडी। आप बोलोगे कि सर क्या अल्फा भी 0 होता है या रिफ्लेक्ट, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, दैट शुड बी मेंशन्ड। बट ओपेक बॉडीज आर दोज बॉडीज फॉर विच द टाउ वैल्यूज आर 0. नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा, रो एंड टाउ, we have tried to divide a surface into various categories, right? तो आप पहले ये लिख लो, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1. टाउ 0 होगा, ऐसी बॉडी को ओपेक कहते हैं, एंड ऑल द इंजीनियरिंग बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओपेक, राइट? सो लेट अस नाउ कंटिन्यू द डिस्कशन। एंड देखो यहां तो मैंने आपको बताया कि एक बॉडी पे कुछ रेडिएशन आई, and that radiation was reflected, absorbed and transmitted. I was saying that any body above absolute 0 also emits radiation. Now emitted radiation is a totally different thing. कई बार students को मैंने देखा है कि वो emission और reflection में confuse रहते हैं। Reflection is the radiation reflected by the part of the radiation which is reflected by the surface. Some radiation is falling on the surface and some part is getting reflected, right? लेकिन emission is a totally different thing, right? Emission आप body पे depend करता है कि कैसी body है, कैसा surface है, right? So a body also emits radiation. भाई यही बॉडी की अगर बात कर लें तो ये बॉडी जो है इस पे रेडिएशन हो रहा है, ये इमिट भी करेगी रेडिएशन, राइट? अ बॉडी ऑल्सो इमिट्स रेडिएशन। एंड प्लीज नोट कि इमिटेड रेडिएशन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन दे आर नॉट सेम थिंग, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। तो ये चीज आप लिख लेना, कई बार आप इन दोनों में कंफ्यूज रहते हो, दैट इमिटेड रेडिएशन इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। So any body emits some radiation, ठीक है? उसी रेडिएशन की बात करें ना, दिस जो मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लिखवाया, दैट द रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडीज एट रूम टेम्परेचर फॉल्स विद इन द इंफ्रारेड रीजन, तो वो जो मैंने आपको लिखवाया था, दे आर इमिटेड रेडिएशन, नॉट द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ओके, सो व्हाट अबाउट इमिशन? वी हैव क्रिएटेड एन आइडियलाइजेशन ऑफ अ बॉडी। हमने कहा कि एक आइडियलाइजेशन बना देते हैं। व्हाट इज आइडियलाइजेशन? वी हैव डिफाइंड अ बॉडी विच इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, नो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? इसकी डेफिनेशन पे एमएसक्यू बन सकता है, तो ध्यान रखना दैट व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। पहली बात, is an ideal body. Why ideal? And why we have created this idealization to set a benchmark. एक benchmark बना दिया कि any real body will emit radiation which will be less than the black body radiation. Means at a given temperature a black body will emit maximum radiation, right? ये लिख लो, at a given time, this is the idealization. भाई हर चीज को कंपेयर करने के लिए आपको real bodies they are emitting radiation, but you have created an ideal body which at a given temperature
अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, इन योर थॉट्स ओनली, नॉट इन रियलिटी, आप अपने विचारों में, अपने ख्यालों में आपने एक ऐसी बॉडी अज्यूम कर ली है which can emit maximum amount of radiation at a given temperature. Now whenever you have a real body, you always compare it with the black body. So black body is an idealization, right? Is an ideal body, okay, which emits, all of them are correct about black body, right? So this is a kind of MSQ, be careful, which emits maximum, ये emission की बात कर रहा हूं, reflection नहीं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, एमिशन की बात कर रहा हूं, विच इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अभी ब्लैक बॉडी की बातें अभी चलेंगी, देखो कितने सारे पॉइंट्स, एक्चुअली ब्लैक बॉडी, दीज पॉइंट्स, द सेम पॉइंट्स कैन बी रिटन इन वेरियस ways, so all the ways I'm writing. So black body is an ideal body which emits maximum radiation at a given temperature. So no real surface और no real body, body लिख लो, surface लिख लो, same thing. कई बार black body की जगह black surface लिख देते हैं और चलेगा, okay. No real surface, no real surface. अब देखो बात तो एक ही है ना, इसने maximum emit किया, या मैं ऐसे लिख दूं, no real surface can emit radiation more than the or equal to the black body at a given temperature, same thing, but still I'm writing all those ways. No real surface can emit radiation equal to a black surface, radiation equal to a black body. No real surface can emit radiation equal to a black body, okay, at a given temperature. Another way of stating a black body, ये भी सही है black body के बारे में, okay. What else? So black body is a perfect emitter, we can say. Black body is a perfect emitter. ये word भी याद कर लो. Black body is a perfect emitter. मतलब इससे बढ़िया तो कोई emit कर ही नहीं सकता. It's an ideal, right? Ideal for all the real surfaces. Black body at a given temperature is going to emit maximum amount of radiation, and no real surface can match this quality of a black body. And why this idealization we have done? So that we can compare the emission properties of all the real surfaces. So that was the third point about the black body. It's an ideal, it's a perfect emitter. Fourth point. A black body, ideal black body, right? मैं black body लिख रहा हूं तो ideal ही मतलब है, ठीक है? मैंने ऊपर लिख दिया idealization is an ideal body, right? A black body absorbs all the radiation, absorbs all the radiation incident on it, absorbs all the radiation incident on it. तो एक black body के ऊपर जितनी भी radiation आएगी, all of that will be absorbed. Again, an ideal condition. So definitely you can say that if all of that will be absorbed, so what about transmission? Zero. बता ट्रांसमिशन तो हमें खैर जीरो ही लेना, ठीक है. But what about if all of that is absorbed, so reflected is also zero, so rho is zero, right? That you must know that for a black body, rho is zero, tau is zero, and alpha is equal to 1. Fine. Okay. So that was about the characteristics of a black body. One more point is remaining. See. Fifth, in fact not one, I'll write 6-7 points. ये आप लिख लो पहले. और क्या कह सकते हैं, देखो. Okay. Right. So a black body is a diffuse emitter. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस दिस स्टेटमेंट है, राइट? डिफ्यूज एमिटर, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफ्यूज? ये डिफ्यूज वर्ड आपसे कई बार रेडिएशन में भी सामने को देखने को मिलेगा, आपके सामने आएगा, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफ्यूज? डिफ्यूज वर्ड मीन्स in all the directions. Diffuse means it is, suppose a body is emitting radiation.
So a body is emitting radiation. Suppose in this angle, the maximum amount of radiation is emitted, while in this angle or this angle, very small amount of radiation is limited. This kind of body is not called diffuse, right? So equal emission in all direction. Equal emission in all directions. ठीक है? So एक black body हर एक डायरेक्शन में बराबर emission करेगी. That is kind of a body is called diffuse emitter. राइट तो ये ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी में अगर आपके पास एमएसक्यू आ रहा है तो ब्लैक बॉडी, दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट रिटन इन वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स. सो वट एवर आई एम टेकिंग हियर, कुछ बातें मैं स्टैंडर्ड बुक से ले रहा हूं एंड सम अदर पॉइंट्स आर दी कंक्लूजन्स. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू हैव टू चैलेंज अ स्टेटमेंट गिवन इन गेट एग्जाम, यू कैन ओनली यूज द स्टैंडर्ड बुक्स. देयर इज नो अदर वे. तो इवन if suppose logically you are finding that whatever is written in this standard book, I'm not able to match it with whatever logic I have understood, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं. Believe me, कुछ गेट की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक आधे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वहाँ उस समय छोड़ने पड़ते हैं. डोंट वरी, आपने बहुत कुछ सीखा है अभी तक, बहुत कुछ सीख चुके हो, एंड जो आपके पास पेपर में आएगा वो इससे कम ही आएगा. ठीक है, सो एक आधे कुछ क्वेश्चन, सपोज 5% 3% क्वेश्चंस ऑफ गेट और 1-2% टॉपिक्स, इफ दे आर स्टिल नॉट क्लियर, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स अगर वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर आपको क्लियर नहीं. बट समटाइम्स 6-7 ईयर्स में एक बार क्वेश्चन आ गया और वो चीज़ आप बाई चांस नहीं समझ पा रहे हो, बट इफ यू आर एबल टू लर्न इट, देन ट्राई टू लर्न. एंड सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न इट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, लीव इट, फोकस ऑन द रेस्ट. राइट, don't lose focus on the main part. What is main part? That from where the 80-90% of the paper is there. See, you can get all India rank 1 even from the 80% 85% of the paper. Proper accuracy is maintained. You can even secure all India rank 1 only from the 85% paper. Right? Leave it. I mean, suppose अगर आप सपोज 7, 8, 9, 10 नंबर्स तक के क्वेश्चंस आप बिल्कुल छोड़ देते हैं. समहाउ सपोज 10 नंबर्स के क्वेश्चन आप छोड़ ही देते हैं, यू डोंट नो नथिंग अबाउट दैट. राइट, आपने 90 नंबर्स के पेपर में ही काम किया है, यू कैन स्टिल गेट AIR 1 बिकॉज इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पास्ट ट्रेंड्स एक्सेप्ट 2017 द टॉपर इज गेटिंग ओनली 85-86 मार्क्स. बट येस, एक्यूरेसी इज मस्ट बी देयर. जो टॉपर्स के नंबर आ भी रहे, 85-86 नंबर जिनके आ भी रहे, दे हैव अटेम्प्टेड आई गेस 92-93 नंबर के अटेम्प्ट करते हैं वो. राइट, सो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आप पेपर में भी छोड़ोगे. यू हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स विच यू शुड नॉट अटेम्प्ट, एटलीस्ट नॉट इन द बिगनिंग. लेटर इफ यू हैव टाइम, यू हैव चेक्ड ऑल योर आंसर्स, यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो अ ब्लैक बॉडी इज अ डिफ्यूज्ड इमिटर. डिफ्यूज वर्ड कहीं भी रेडिएशन में आ रहा है. मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो टर्म्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में. डिफ्यूज वर्ड का मतलब होता है इक्वल, एक्चुअली इमिशन, डिफ्यूज वर्ड हैज नथिंग टू डू विद इमिशन. एक्चुअली डिफ्यूज वर्ड का इतना ही मतलब होता है इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. इमिशन तो यहां से आ गया बिकॉज इट इज इमिटर. डिफ्यूज वर्ड हैज नथिंग टू डू विद इमिशन. डिफ्यूज मीन्स same kind of behavior in all directions. So a black body is a kind of diffuse emitter. Right, so we also call this body as a perfect absorber. ये तो आपने स्कूल्स में भी पढ़ा है that a black body is perfect absorber and perfect emitter. तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन कोई इमिट नहीं कर सकता. राइट, ब्लैक बॉडी is going to absorb whatever falls on it. Now a question arises that we are using this word black. Do ideal black body exist in this universe or not? Right now still we are trying to approach. आपने कई बार नए रिसर्च हो रहा है, कई बार मैंने भी हाल ही में देखा था that some researchers were able to develop a powder which was so black. मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक था कि सपोज if I take a white paper and I put a pile of that powder on that white paper, it will just appear as a circle. वो इतना ज़्यादा ब्लैक था. राइट, भाई अगर कोई चीज ब्लैक नहीं होती, यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश ओके दैट देयर इज अ पाइल ऑफ पाउडर किप्ड ऑन दैट पेपर. पर वो पाइल ऐसा था कि अगर आप पाउडर ऐसे रख दोगे ना, आपको लगेगा जस्ट देयर इज अ सर्कल. सारी लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी. आपको पता है दैट इफ सरफेस इज एबल टू एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, इट विल अपीयर ब्लैक. सो वहां से एक स्टेटमेंट एक दो मैं निकालता हूं यहां पे दैट ओके, एन आइडियल ब्लैक बॉडी will
always appear black. Will always appear black. An ideal black body will always appear black, लेकिन at room temperature. Why? See, simple thing. If you suppose heat the black body, then the black body is absorbing all the radiation. So आपने पढ़ा है ना कि why we see the color of any object. The color of a particular book is orange. This book is of orange color. Why? Simple reason. It is absorbing rest of the things, but it is emitting only orange color, or those colors which when they get mixed, they produce orange color sensation to the eyes. आपने पढ़ा है भाई जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमें दिखता है, right? If it falls under the visible spectrum. Now suppose if you are heating a black body, then the black body is still absorbing all the radiations falling on it, but emission start हो जाएगा. When temperature increases, the temperature of the black body increases, its thermal emission also increases. भाई ज्यादा आपने देखा है कई बार हाई टेम्परेचर्स पे जो आयरन रॉड है वो रेड हो जाती है. Why? Because they are emitting radiation. Now a black body at some higher temperature may emit a radiation which falls under the visible category, and then the black body may appear of some orange or a reddish color, right? So at higher temperature, a black body may emit, higher temperature a black body may emit बोल रहा हूं, रिफ्लेक्ट तो करेगा ही नहीं, emit radiation which falls under the visible category, radiation which falls under visible category, right? Which falls under the visible category, and hence it may appear colored. ठीक है, आपको ब्लैक बॉडी का भी कलर दिख सकता है if the temperature is high, but if the black body is ideal black body, right, it is absorbing everything and the temperature is room temperature, it must be black. Now the question arises that, sir, can a body having a different color act as a black body at room temperature? If it is ideal, but then no, definitely no. But there are some in real cases there is no ideal black body, right? But in real cases there are some surfaces which absorb most of the radiations. For example, snow. For snow, it is the value of alpha is approximately 0.85, 0.9 or 0.9 के ऊपर भी जा सकती है. Sometimes white paint is also kind of a black surface, right? So in reality what happens that suppose if you take the example of snow, the alpha value is let's say 0.9. I don't know the exact value of for snow, और snow में भी अलग अलग varieties होंगे जिसके लिए alpha अलग अलग होंगे, because alpha depends upon the surface, upon the material. Suppose snow appears to be white, but still it is a kind of, we say that it's a black surface. Why? The absorptivity of this alpha, the absorptivity of snow is very, very high. So it is kind of close to a black surface. Snow can be example of black surface in real life. अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से out of this which of the following is very close to a black body and snow is there, then snow is the example. White paint absorptivity is very high, right? Still they appear white in color. ठीक है, so जरूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ अगर ideal black है और room temperature है, then definitely it will appear as a black colored body. That is a kind of body according to the nature of the surface. Another classification is a white body. Another classification is white body. देखिए sorry, white body. Sorry, a surface which reflects all the radiation, all the incident radiation. भाई tau तो zero होगा ही, है ना? A surface which reflects
all the incident radiation is called a white body, right? All the incident radiation is called a white body. Is called white body. Means definitely for this kind of body, alpha must be 0 because nothing is absorbed. सब कुछ reflect हो रहा है, जो transmit भी कुछ नहीं हो रहा, so tau is equal to 0, but rho is equal to 1. ठीक है? This kind of white body. Whatever radiation is incident, that is completely reflected. और सारी की सारी रेडिएशन अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, तो डेफिनेटली उस बॉडी का कलर कैसा नजर आएगा आपको? अगर नजर आएगा तो कैसा नजर आएगा? व्हाइट ही नजर आएगा. If all the radiation is reflected, then definitely all of the colors, visible colors, are going to mix and the body is going to appear white. Okay, so in white bodies also there can be a further categories, that a white body can be a kind of diffused reflector. So diffused body, or it can be a specular body. It can be a specular body. Diffused and specular are kind of opposite of each other. देखो दोनों के केस में रो की वैल्यू 1 होगी, right? But as I told you that in this case also rho is 1, in this case also rho is 1. A specular body means the reflection, the reflected radiation is like a mirror. The reflection is only taking place in a particular direction. That is called this specular body. Suppose this is the surface, right? This is the surface, and yes, it is opaque. This is the opaque surface. Okay, this is the opaque surface. Reflected radiation just like a mirror. Okay, and incident radiation and reflected radiation. This is a specular body. But for a diffuse surface, if the surface is diffused, in that case, this is the incident radiation, and then the reflection will be same in all the directions. This is a kind of diffused body. ठीक है? तो diffuse का मतलब देखो, अगर emission की भी बात कर रहा हूं, then it means in all the directions, equal in all directions. Now, how you can make a surface diffuse? A rough surface act as a diffuse surface, while a cleaned, polished surface is going to act as a specular surface. Write down a rough surface. भैया आपने अगर सरफेस को खुरदरा बना दिया, surface was polished but then you made it rough by using some techniques, right? In that case, you will be making a specular body a diffused body, right? A rough surface is a diffused surface, while a shiny polished surface is a specular surface, right? Is a specular surface. ठीक है? तो क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं. ठीक है? ये रफनेस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, पॉलिश कर दोगे तो क्या होगा, मिरर लाइक फिनिश दे दोगे, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? ओके, just like a black body, white body, we have one more idealization, that is a gray body. ये सारी idealizations है भाई. रिफ्लेक्टिविटी 1 होगी क्या रियल सरफेस की? नो. ग्रे बॉडी, डोंट राइट GREY, इट इज GRAY. ग्रे बॉडी, यू से दैट कि सर ग्रे बॉडी तो रियल होती है. नो, ग्रे बॉडी इज नॉट रियल, राइट? ग्रे बॉडी इज ऑल्सो एन आइडियलाइजेशन. आई विल टेल यू व्हाई. ग्रे बॉडी, फर्स्ट पॉइंट, इज एन आइडियल बॉडी. अच्छा, व्हाइट बॉडी भी आइडियल बॉडी है क्या? हाँ भाई, 100% रिफ्लेक्शन तो नहीं होती रियल बॉडीज में. ओके, एंड इफ यू आस्क मी कि सर रियल बॉडीज दे आर लाइक स्पेकुलर बॉडीज और डिफ्यूज्ड बॉडी, मोस्ट ऑफ द रियल बॉडीज आर लाइक डिफ्यूज्ड सरफेस, बट वी कैन ट्राई टू अप्रोच दिस स्पेकुलर सरफेस बिहेवियर ऑल्सो बाय मेकिंग इट वेल पॉलिश्ड. ओके, सो ग्रे बॉडी इज एन आइडियल बॉडी. कीप राइटिंग. थ्योरी है भाई यहाँ पे, तो थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चन रेडिएशन में बन जाते हैं, फिर हम घूमते रहते हैं. ठीक है? ग्रे बॉडी इज एन आइडियल बॉडी. The value of absorptivity is less than 1. Like for a black body, you know, the value of absorptivity is equal to 1. So the value of alpha is definitely less than 1.
द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, आप बोलोगे सर रियल बॉडीज के लिए भी तो अल्फा लेस देन 1 होता है, यस, सो इट शुड बी अ रियल बॉडी, नो, द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी शुड बी लेस देन 1, should be less than 1. So one point which is important for a gray body is alpha is less than 1, right? But what makes it an idealization is the third point, that the properties of a gray body, whether you talk about alpha or you talk about emission or absorption, ठीक है, the property of a gray body कई बार alpha के लिए लिख देते हैं, but other properties also. In many books you will find it written that only alpha, but not only alpha, but other properties also. Alpha and other properties of a gray body are independent. Alpha and other properties of a gray body are independent of the wavelength of incident radiation. Independent of the wavelength of incident radiation. समझ आया? Okay, suppose that the incident radiation is having some wavelength, any 10 to the power minus 2 micrometers, some incident radiation is there. For that, if alpha is 0.8, then for let's say 0.5 micrometer also the alpha will be 0.8, for 0.9 micrometer, for 1.2 micrometer, for 10 micrometer, for any wavelength of incident radiation, if alpha value is 0.8 for a gray body, it will be 0.8 for any incident wavelength. Means the properties of a gray surface are independent of the wavelength of incident radiation. This is the idealization. Normally ऐसा नहीं होता. Normally एक surface, देखो एक particular surface होगी ना, that particular surface can act like a black surface for a particular wavelength, but not for the other wavelength. मतलब एक for a real surface, the value of alpha can be very close to 1 for a particular type of incident radiation, but it may not be close to 1 for some other kind of radiation. So these all, the gray body, the white body and the black body, all of them are kind of idealization. तो इनकी definitions आपको याद रखनी है. थोड़ा सा अब real surface के बारे में आपको बता दूं, ठीक है? And then I am going to write some terms. वो टर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज इन क्वेश्चंस दोज टर्म्स आर यूज्ड, ठीक है? और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अगर बनाना होगा देन डेफिनेटली उन टर्म्स का यूज करके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है? तो these all were some kind of idealization, some or other kind of idealization. If you ask me that, sir, how a real body is like, so real body is kind of alpha will be less than 1 definitely, right? And it will be also dependent on lambda. Okay, it will be more like a diffuse surface. However, a real body can also be like it can be made like a specular surface also. So diffuse या specular कुछ भी हो सकता है, but पूरी तरह से specular नहीं होगा, ध्यान रहे. 100% rho हो ही नहीं सकता, rho cannot be equal to 1. Okay, so but yeah, definitely for a real surface, the absorptivity, the emissivity, right? It's a function of temperature. It's a function of lambda, right? So आप एक लिख लेना है यहाँ पे gray body के बाद लिख लेना that for a real surface. For a real surface, alpha, not only alpha, other properties also, alpha is dependent on the wavelength of incident radiation. Alpha is dependent on the wavelength of incident radiation. लिख लो, dependent on the wavelength of incident radiation. ठीक है? Wavelength of incident radiation. So a real surface may act close to black surface, may act close to black surface for a particular incident radiation, close to black surface for a particular incident radiation, for a particular incident radiation, but not for another radiation. ठीक है? आई होप ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगर इतना भी क्लियर हो गया बहुत है, ठीक है? नॉट फॉर अनदर रेडिएशन. तो एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन है, उस रेडिएशन के लिए सरफेस ब्लैक जैसा है, मतलब एब्जॉर्प्टिविटी लेट्स से 0.95,
but for some other kind of radiation, the absorptivity can be as low as 0.35. This is the behavior of real body. That is why a gray body should also be called as an ideal body. Right now, we are left with some definitions, some terms like emissive power, emissivity, spectral emissive power, hemispherical emissive power, monochromatic emissive power. एक बार ये चीजें क्लियर होंगी, so that thereafter we can go to the laws of radiation. The first term for a radiation is written as E, capital E. Say capital E, small e, they have different meanings in radiation, right? So E and lambda. और कई बार यहाँ पे T भी लिख देते हैं, ठीक है? E lambda T. Okay. So what is E lambda T? So you should write this as E stands for, actually capital E always stands for emissive power. Okay. Capital T is emissive power. But there are some other words also which we use here. पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ emissive power. ध्यान रखना, the words emissive power and अभी आगे चल के emissivity आएगा, they are different, right? They have different meanings. So E lambda T is emissive power. We use here word called spectral. अब जैसे मैंने आपको diffuse word का meaning बताया था, diffuse word means that the surface is emitting or reflecting radiation in all the direction. In that case only we use the word diffused. एक word use करते हैं हम लोग spectral, और spectral के अलावा जो इसका एक और आप कह लो synonym है, that is monochromatic, right? So instead of spectral I can also use monochromatic. So the meanings of this word must be clear. See, spectral or monochromatic means for a particular wavelength. I mean spectral word जहां भी लग गया radiation में, wherever spectral word comes, it means it refers to a particular wavelength. ठीक है? So either you say monochromatic word आपने पहले भी सुना होगा. Monochromatic means जब आप हाई स्कूल में थे तो मोनोक्रोमैटिक को एक पर्टिकुलर कलर से बात करते थे, एंड कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एक्चुअली. सो मोनोक्रोमैटिक मींस फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. इन रेडिएशन वी आल्सो यूज द वर्ड स्पेक्ट्रल. तो ये स्पेक्ट्रल या मोनोक्रोमैटिक एक ही बात है, और जहां भी स्पेक्ट्रल लगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर लैम्डा. ई लैम्डा, सी कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर एमिसिव पावर, and lambda means at a particular, for a particular wavelength at a particular temperature. E lambda T. स्पेक्ट्रल एक वर्ड साथ में और जोड़ दिया जाता है यहां पे, हेमिस्फेरिकल. स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल स्पेस नहीं है थोड़ा, आई एम राइटिंग लाइक दिस. स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल? मींस, हेमिस्फेरिकल मींस radiation in all the direction have taken care of. मतलब मैंने रेडिएशन जो इमिट हो रही है सारी डायरेक्शन की रेडिएशन के हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट किया हुआ है कि एट अ गिवन, फॉर अ गिवन वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएशन इमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. एंड हाउ आई हैव कैलकुलेटेड? रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस आर टेकन केयर ऑफ. So the word hemispherical is used to make a sense of all the directions. Suppose direction are taken care of by integrating the radiation over an imaginary hemisphere on the surface. Okay, integrating the radiation over imaginary hemisphere, मतलब देखो कोई सरफेस के ऊपर जस्ट अज्यूम अ इमेजिनरी हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मींस नाउ ऑल द डायरेक्शंस. हेमिस्फीयर मतलब ऑल द डायरेक्शंस हो गया. एंड यू इंटीग्रेट द रेडिएशन ओवर ऑल द डायरेक्शंस. उस डायरेक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो आया, दैट देन वी यूज द वर्ड हेमिस्फेरिकल, राइट? स्पेक्ट्रल मींस फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, हेमिस्फेरिकल मींस इन ऑल द डायरेक्शंस ओवर एन इमेजिनरी. आप इमेजिनरी हेमिस्फीयर अज्यूम करके देन इंटीग्रेट कर देते हो, राइट? देन जो आपके पास एमिसिव पावर आता है, दैट इज कॉल्ड ई लैम्डा टी. स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर. इन मेनी, इवन इन गेट एग्जाम दे डोंट यूज द वर्ड हेमिस्फेरिकल. तो आप इस हेमिस्फेरिकल को वो कई बार यूज नहीं करते. इन द एग्जाम दिस हेमिस्फेरिकल वर्ड इज नॉट यूज्ड. But still, you should assume that it is spectral hemispherical, means already the direction has been taken care of. आपको direction के respect में उसको integrate करने की जरूरत नहीं है. That is the meaning of spherical, spectral hemispherical emissive power. Now, one more thing that sometimes we use this E, B, and then lambda T.
अब B जहां पे आ गया, B stands for a black body, E stands for of a real body, emissive power of a real body, of a real body. ठीक है, so B लग गया तो everything is same, but now it is a black body. So I'll write this as spectral hemispherical emissive power of a black body. Emissive power of a black body. ठीक है, so that is called EB lambda T. Now if I ask you that what is the units of E lambda T or spectral emissive power, E lambda T, ये सबस्क्रिप्ट में आते हैं, lambda and T सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है. So that is actually emissive power has the unit of again the same unit as of G, right? So it has the unit of, but because it is spectral, so wavelength will also be there, right? So it is energy in the form of radiation, of course, by area, by time, okay, per unit wavelength, right? Wavelength, ये ध्यान रखना कि इसकी यूनिट अगर आपसे पूछे, the unit of spectral emissive power is this, right? Now there is a term used which is called total. देखो ये जो total word है, what is the sense of this total? This total is the sense that we have integrated the spectral emissive power over all the wavelengths. तो ये जो टोटल है ये wavelengths के लिए आता है, that we have integrated the spectral emissive power over all the wavelengths, means from 0 to lambda. So we will call it, तो अगर मैं टोटल लिखूंगा तो स्पेक्ट्रल नहीं लिखूंगा, बट यस हेमिस्फेरिकल लिख सकता हूं. बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस हेमिस्फेरिकल वर्ड इज जनरली omitted, बिकॉज ये हेमिस्फेरिकल मीन्स वो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, आपने रेडियंस टी रेडियंस पढ़े है ना, वो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, उतना रेडिएशन की डिटेल हमें नहीं जाननी है ना, बिकॉज आप कोई भी बुक स्टैंडर्ड बुक देखोगे देन सबसे पहले रेडिएशन में वो वॉल्यूम एलिमेंट्स बना के इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड for us. Okay, so this hemispherical is generally you won't find in gate questions. So total hemispherical emissive power of a real body, that will be denoted by E, right? And what will be the unit? By how to find this? We will write this as E is equal to integral from for all the wavelengths of spectral emissive power E lambda T with respect to lambda. इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से टोटल, सिंपल प्रॉब्लम, बट समटाइम्स इवन वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रल एंड टोटल, सो पता नहीं लगता कि करना क्या है. ऑफ अ रियल बॉडी, देन टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ये हेमिस्फेरिकल का जो सेंस है वो डायरेक्शन का सेंस है बस, राइट? टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. whenever you write black body, there will be only difference between this and black body, B subscript will be added. Of a black body, you just write here EB. Now how to find EB? EB is found by integrating from 0 to lambda for all the wavelengths. EB lambda T, right, and D lambda. That is the total hemispherical emissive power. Now what is the unit of total emissive power? भाई आपने इंटीग्रेट कर दिया with respect to wavelength. Now this wavelength will be omitted and the unit of emissive power will be energy by area by time. ठीक है? Now here we define a term called emissivity, denoted by epsilon. Emissivity. Very simple and dimensionless also. Emissivity of a surface, of a real surface, is defined as the ratio of emissive power of the surface divided by emissive power of a black body. But if it is epsilon lambda, then it will be lambda, and of course epsilon lambda T, this will be lambda T and lambda T. But simple सी बात है. This is called spectral emissivity. Let me write here, this is called spectral emissivity. Spectral emissivity, again because it is calculated for some particular value of lambda. Then this is total emissivity. यहाँ पे केवल T रहेगा, right? This is called total emissivity because emissive power is going to change with temperature. Now total emissivity is equal to ET by EBT, right? Both this total and spectral emissivity must be dimensionless.
राइट। सो इमिसिविटी और इमिसिव पावर के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इमिसिविटी इज अ रेशियो व्हाइल इमिसिव पावर इज नॉट अ रेशियो। और इमिसिव पावर में भी आई हैव स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, टोटल इमिसिव पावर, टोटल इमिसिविटी। Obviously, because emissivity is defined with respect to a black body, so if you ask me that what is the emissivity for a black body, that is definitely equal to 1. Correct? Emissivity is equal to 1. Because you know that no body can emit radiation. This emissivity is related to emission, not reflection. Okay? Nobody can emit radiation more than a black body. I am defining emissivity like this. And therefore emissivity of a black body must be equal to 1. Right? So please note, ये कुछ terms थे जो मैं आपको बता रहा था कि ये terms आपको definitely मालूम होने चाहिए, because these terms are frequently used in this radiation laws. ठीक है? Now let us do some more discussion about this. ये theory चल रही है, मैंने आपको बताया कि कुछ theory से questions definitely बन सकते हैं if they want to give you easy problems from radiation, right? Then this theory is the most probable section from where the question can be picked, right? Okay, then what do we have? We have some laws. After this we have laws, right? Like Kirchhoff's identity, Planck's law and Wien's displacement law. ये 3 लॉ है जो आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन है but it is entirely mathematical in nature. I won't discuss that derivation. Still, if you feel like कि नहीं सर अब मुझे सब कुछ आता है, मुझे अब डेरिवेशन किसी तरह से बता दो, तो you can discuss with me. Okay, that is of no use. That is no use. हाँ, कुछ मतलब अब कोई आपके सामने उस डेरिवेशन को सॉल्व करके अपनी थोड़ी रेपुटेशन दिखा सकता है कि हाँ आई नो दीज थिंग्स, बट दैट इज ओनली मैथमेटिकल। आप भी चाहो तो उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हो, राइट? बट वी वॉन्ट गो इनटू दैट, दैट विल बी अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस। ओके, सो व्हाट आर द लॉज? फर्स्ट लॉ इज द किरचॉफ आइडेंटिटी और किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स आइडेंटिटी, राइट? This identity says, derivation भी है छोटी सी, but okay, that's not important. This identity says that for a body which is assumed to be in thermal equilibrium with a black body, for a body which is assumed, this body is a real body, right? For a body which is assumed to be in thermal equilibrium with a black body, for a body which is assumed to be in thermal equilibrium with a black body, alpha means absorptivity is equal to emissivity. ये ध्यान रखना है, किरचॉफ लॉ ये कहता है कि absorptivity of a body is equal to its emissivity. एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट में एक कंडीशन है दैट दिस हैज टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ ब्लैक बॉडी, बट फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ यू फील लाइक दिस एब्जॉर्प्टिविटी इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट गिवन, अल्फा इज गिवन, यू कैन ऑलवेज यूज दिस किरचॉफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमेशा यूज कर लेना दैट अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, absorptivity is equal to emissivity. There was a question in GATE that how the emissivity of a body can be reduced. ये क्वेश्चन का कई जगह गलत आंसर दिया हुआ है, दैट इज आई एम डिस्कसिंग हियर हाउ द एमिसिविटी ऑफ द बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड, okay, simple funda that for any surface alpha plus rho is equal to 1. Correct? I'm assuming engineering body, so tau is equal to 0. If we give mirror finish to the body, if we give mirror finish means I'm increasing rho, mirror finish to the surface. If we give mirror finish, ये लिख लेना बिकॉज ये गेट का सवाल है और इसका आंसर हर जगह गलत है, और अगर कहीं सही है भी तो शायद बाई चांस उन्होंने सही बता दिया, they have not provided the correct explanation. Okay, so if we give mirror finish to the surface, then you know that for mirror finish rho increases, alpha decreases because the sum has to be 1. And from Kirchhoff identity, alpha must be equal to epsilon. So emissivity, if this decreases, this also decreases. That's it. बस इसमें और ज्यादा नहीं सोचना है। रफ करोगे, ठीक है, रफ करने से emissivity नहीं बढ़े। रफ, making the surface rough or shiny has to do with the specular or diffuse, but उससे emissivity पे फर्क नहीं पड़ेगा, right? But आपने पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन रो आप ज्यादा बढ़ा पाओगे, right? A polished surface has more rho and hence less alpha and hence less emissivity. Correct?
So that is one identity, Kirchhoff. How to use this identity, that is important. Alpha को E के बराबर रख दो, that's it. That is one identity. Second identity is Planck's identity. Okay, Planck's law. This law has a mathematical derivation. So सबसे पहले आपको Planck's law बता दूं. What was this? That the spectral emissive power of a black body, right, EB lambda, and of course at a particular temperature, right? Planck's law says that the spectral emissive power of a black body is given as C1, some constant C1, into lambda raised to the power minus 5 divided by e raised to the power divided by exponential some other constant C2 divided by lambda t minus 1. Correct? That is expression. Right? This is the Planck's law. अब यहाँ C1 और C2 की कुछ वैल्यूज होती हैं. Right? C1 is equal to 2 pi c square h. Right? Just a minute. And C2 is equal to, yeah, C1 is equal to 2 pi c is the speed of light, h, and C2 is equal to this is ch by k, right? Ch by k, where h, you know that h is Planck's constant while k is Boltzmann constant. Okay, k is, it is not rate constant or any other thing or conductivity, it is Boltzmann constant. Okay, which is equal to 1.38 multiplied by 10 raised to the power minus 23. आप units देख सकते हो from dimensional consistency. We have already discussed the unit of h. So this is meter square kg. देख लो एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है गलत हो मेरे पास. So the unit of k should be, this is c is meter per second, right? Okay. C2 should have the unit of lambda t, right? Okay, fine. This should have the unit of meter square kg, right, second square and Kelvin. That is Boltzmann constant. इसकी derivation आपको नहीं करनी है, right? When you put this value of C2 and Ca, because all the constants are there, when you put this value here, right, and thereafter we have some final results. I'm just giving you the final result. That is at a given temperature, right? That at a given temperature, means temperature is constant, right? So at a given temperature, the monochromatic emissive power, what is this? This is monochromatic emissive power of a black body. Monochromatic hemispherical, मैं बता रहा हूँ hemispherical word को omit कर दिया जाता है, right? At a given temperature, the monochromatic emissive power, this terminology should be very clear. Monochromatic emissive power of a black body, passes through a maxima at some particular value of wavelength, right? Black body passes through maxima, right? Passes through a maxima. Temperature के रिस्पेक्ट में नहीं, because temperature तो constant है. At some temperature, at a given temperature, right, monochromatic emissive power will pass through a maxima for some value of, मतलब किसी एक particular wavelength के लिए इसके emission जो होंगे वो क्या होंगे, highest होंगे, right? Emissive power will be highest. Passes through a maxima for a particular value of wavelength. उस value of wavelength को हमने कह दिया lambda max. For a particular value of wavelength, which is called lambda max. That particular value at a given temperature, the value of wavelength for which the emissive power, spectral emissive power of a black body is maximum, is called the lambda max. Now how you are going to find this? This is EB lambda by T. इसको आप differentiate करो with respect to what? With respect to lambda and equate it to 0, right? I'm not going to differentiate. So D by D lambda of this EB lambda, right? EB lambda T, please treat temperature as constant, differentiate it and equate it to 0. आपको जो वहां से result मिलेगा, that is an identity which is called Wien's displacement law, and that is obtained as lambda max. Lambda max is at a given temperature, the value of lambda for which the emissive power, spectral emissive power is maximum, is equal to
2898, right? And what is the unit? Micrometer Kelvin, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और यही बताता है दैट at higher temperature the value of lambda max will be low, right? It's very simple, right? So this is called, इस Planck's law को आपने आगे solve किया and then now you have this Wien's displacement law. Wien's displacement law. Okay. Wien's displacement law. First of all, first observation from here, what is this? What is this observation? That at a given temperature, if you make a graph between EB lambda versus lambda and temperature is the parameter, आप parameter temperature को constant रखो, you make a graph between EB lambda versus lambda, right? So at some value of lambda, right, at some value of lambda, for a particular value of temperature, at some value of lambda, the EB lambda, the spectral emissive power will be maximum. So suppose we have this kind of graph, right? At some value, this is where the EB lambda, suppose this is temperature is equal to some temperature, let's say 500 Kelvin, right? This is lambda max and this is the maximum value EB lambda. But suppose now temperature was constant, but suppose now I am increasing the temperature. If the temperature now became 700 Kelvin, at 700 Kelvin the lambda max should decrease, means this maxima should shift on the left side. तो आप फिर से देखो, this graph is for, let's say, this kind of, you can see that the maxima is this kind of graph will be there. This is lambda max for 700 Kelvin temperature. और इसी तरह आप देखोगे कि ये जो मैक्सिमा है ये लेफ्ट साइड, बिकॉज लैम्डा मैक्स इज गोइंग टू डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर्स, ये जो मैक्सिमा है ये लेफ्ट साइड में डिक्रीज करता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, करेक्ट? ओके, सो राइट, ओके, इसीलिए आपने ये देखा होगा दैट सपोज व्हेन सपोज room at room temperature, means at 298 Kelvin, at 298 Kelvin our iron rod is kept there, you can't see any visible radiation. But as you increase its temperature, the lambda max is going to shift, and from infrared region it comes into the visible region and you are able to see any color. So this relation is called Wien's displacement law. So I told you that there are two identities, one is Kirchhoff identity, then we have Planck's law, then we have Wien's displacement law. And from this law only the total emissive power can also be defined. Let me write that total emissive power. Okay, but before that let us write one conclusion was this, one more conclusion is there for this graph. Write down. यहाँ से आपके पास फिर से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एमएसक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? पहले ग्राफ बना लेना, ओके? The emitted radiation conclusions, these are the conclusions for that Planck's law and the Wien displacement law. First conclusion is the emitted radiation is a continuous function of wavelength, okay? Continuous function of wavelength. The emitted radiation is a continuous function of wavelength, okay? At any specified temperature, the same points hai, almost same. At any specified temperature, it increases, right, with wavelength reaches a maxima. It means what? The emitted radiation. It increases with wavelength, means in this direction, with wavelength reaches a maxima. उस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन है, एक सिंगल ग्राफ का डिस्क्रिप्शन है, reaches a maxima, right, and then decreases, okay? That was one observation. Second observation, at any wavelength, भाई एक बार तो आप टेम्परेचर फिक्स कर दो, if temperature is fixed then this is the graph, but they are saying if at any wavelength means
this is the scenario. Suppose this wavelength, at this vertical line, a wavelength is constant, right? So at any wavelength, the amount of emitted radiation, you can see that at any wavelength, the amount of emitted radiation increases with increase in temperature, okay? So at any wavelength, the amount of emitted radiation increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. ठीक है? Increases with increase in temperature. Okay. Now I already told you that as at a given temperature, okay, process of maxima. Okay. So एक और statement लिख लेते हैं that as temperature increases, means I'm going from 500 Kelvin to 700 Kelvin, let's say. This is for temperature 700 Kelvin, this one. So as temperature increases, the maxima shift towards the left direction. वही point लिख पा रहा हूँ. As temperature increases, the curve shifts towards left, है ना, to the shorter lambda region. भाई यहाँ पे lambda is getting short, lambda max, everything is getting shorter, okay, towards the shorter lambda region. Okay. आपको ये बता दिया कि total emissive power आप कैसे ले आओगे, right? And we also have one more law that will be used for you to by you to calculate the amount of radiation, the total amount of radiation. वो भी इसी फॉर्मूले से इंटीग्रेट करके ही आएगा, right? Because I told you that how to calculate EB. EB will be calculated by EB lambda d lambda. EB lambda का एक्सप्रेशन दिया, उसको d lambda with respect to lambda आप इंटीग्रेट करो, and you will find that EB means the total hemispherical emissive power of a black body is equal to sigma. ये आपके सबसे काम का लॉ है, राइट? EB is equal to sigma T4, and E means for a real body, E of course at a particular temperature, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे निकालोगे, that will be emissivity into sigma into T4, right? That is the Stefan Boltzmann law. आप कह सकते हो sigma is the Stefan Boltzmann constant. ये आप पहले भी पढ़ते आओ, तो बस इसको लिख लो, Stefan Boltzmann constant, right? That is the value of sigma, and it is given as 5.67. ये sigma आपको याद रखना है, ध्यान रहे, into 10 to the power minus 8. Energy is having the unit of watt. So watt raised to the power. अच्छा, this is emissive power, right? Emissive power is what? Emissive power is per unit area per unit time. Okay, so it is energy by area by time. So it should have watt per meter square, right? Divided by Kelvin raised to the power 4. Watt per meter square per Kelvin raised to the power 4. So ध्यान रहे कि sigma T4 is only applicable for a black body. If it is a real body, then emissivity must be known. आपको मैंने Kirchhoff identity भी बता दी. Now we have completed the basic laws of radiation, and इतनी चीजें आपको थोड़ी सी थ्योरी भी शुरू में बता दी. इतनी चीजों से आप वैसे ही देखोगे कई सारे क्वेश्चंस आपके पास गेट में भी आए हुए होंगे. Now we are ready to discuss about the heat transfer by radiation between two bodies, when the two bodies are black, when the two bodies are gray, and then we will discuss about the view factors. ठीक है, तो this was the basic, the terminology, the basic laws. मैंने किसी की डेरिवेशन नहीं कराई है, गेट में कोई भी डेरिवेशन काम नहीं आएगी, ठीक है. स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप उससे पूछ लेना कि किस तरह से डेरिवेशन होती है. सर all of these things, this sigma T4, this sigma T4, the lambda into T max is equal to 2898 Kelvin, all of them can be derived.